We all want to be hot. There is something about people who come across as hot, right? And we all have seen those people in our lives as well. There's something very charming about them. They come across as very mesmerizing. और उन्हें देख के लगता है कि यार ये बंदी कितनी हॉट है, ये इंसान कितना हॉट है. I wish I was like that. यार मैं कैसे ऐसे बनूं? Because the way they talk, the way they walk, the way they carry themselves, and it's not only about the way they look, let me tell you that. It's something about their aura, their personality that attracts us to them. और हम उनको सिर्फ देखते हैं. अभी तक हमने उनकी स्किल्स नहीं देखी, अभी तक हमने उनका टैलेंट नहीं देखा है, हमने सिर्फ उन्हें देखा है, हमने उन्हें सिर्फ सुना है. एंड इंस्टेंटली वी बिलीव दैट देयर इज नो पर्सन मोर ब्यूटिफुल देन देम. ये कितनी बड़ी प्रिविलेज है. And yes, pretty privilege works. There is pretty privilege. And it is backed by psychology. क्योंकि psychology में there is a phenomena called halo effect. जहाँ इंसान के एक फील्ड में अच्छे होने से हमें लगता है कि वो और फील्ड्स में भी अच्छा है. So if a person is beautiful, we will eventually believe that the person is also talented at other fields. That person is good at, let's say, academics. That person is good at, let's say, public speaking. That is psychology. So becoming hot is really crucial in this world where every person is literally working on themselves. Every person is focusing on self-help and self-love. So hello and welcome to my channel. This is Chia Visht and I hope aap sab log achhe ho. And in this video we are going to talk about 9 habits that can make you look hot instantly. So let's dive right in. Okay, so the first thing that I have written is read books. To me, not a single person comes across as hot if they are just pretty on the face and nothing is here. एक इंसान जो कि बुक्स पढ़ता है, is well read, will eventually अपने आप ही they will come across as intellectual. क्योंकि जिस तरीके की वो बातें करते हैं, जिस तरीके के लोगों से वो surrounded रहते हैं, it's entirely different than normal people. Because if you are well read, तुम्हें हर जगह की knowledge होगी. And trust me, since I have come to my college, one thing I have realized is knowledge is power. मैंने खुद बुक्स आई थिंक इट्स बिन 3 years or 2 years मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी हैं और उतने एक्सटेंड तक नहीं पढ़ी है जितना आई कुड हैव. एंड आई कैन फील द चेंज. आई कैन सी दैट द पीपल हु आर अराउंड मी दे आर सो नॉलेजेबल. उन्हें हर जगह की नॉलेज है एंड व्हेन दे स्पीक इट शोज. एंड व्हेन आई लुक एट देम आई फील कि यार ये इंसान कितना हॉट है. जस्ट बिकॉज दे हैव नॉलेज. विजडम इज अगेन पावर. यू नो हॉट क्या होता है? हमने एक तो ये कॉमन परसेप्शन बनाया है कि जिसकी स्लीक जॉ लाइन हो, जिसका बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फेस हो, वही हॉट होगा. नहीं, देखना प्रियंका चोपड़ा. Look at Priyanka Chopra. Does she even fit the Indian beauty standards? I don't think so. She's dark-skinned, right? And she's not fair. But yet she comes across as so hot. Not cute, not just pretty, but hot. क्योंकि she's so well spoken, she's so confident, and that can only come जब तुम बहुत सारी books पढ़ोगे, जब तुम अपना brain अच्छी चीज़ों से fill करोगे. So reading books is very important. The second thing which is in alignment with this very thing is the work on your communication skills. मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि कितनी बार मेरे साथ खुद होता है. I consider myself as a great communicator. और मुझे कितनी फील्ड्स में नॉलेज नहीं होती है, बट बिकॉज आई एम अ गुड कम्युनिकेटर मैं उस चीज़ पे बोल लेती हूँ किसी भी तरीके से स्पॉन्टेनियसली. एंड पीपल थिंक कि अरे यार इसे तो पता है, एंड दे इवन अप्रिशिएट मी. आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ टुडे ओनली. देयर वाज दिस क्लास ऑफ माइन एंड देयर वाज दिस गर्ल एंड it was clearly showing कि जो she was presenting a PPT and people started asking her questions. और वो साफ दिख रहा था कि उसे नहीं पता था the things that she was speaking. But the way she spoke, oh my God, how confident she was. जिस तरीके से उसने अपने आप को present किया और she kept on speaking. I think the 99% of the class was fooled. Everybody would have thought कि wow, ये कितनी अच्छी speaker है. In fact, the teacher itself was impressed. Just because she knew how to communicate. So communication is another thing that makes you extremely hot. Look at all the beautiful people. Look at Malika Sherawat, how hot she comes across. Because वो जिस तरीके की बातें करती है, जिस तरीके से बोलती है. Aishwarya Rai, she is not only hot because of the way she looks, but also जिस तरीके से वो अपने आप को present करती है international forum में. The way she speaks. Look at Rekha.
Oh my God, have you seen Rekha's interview? इट्स कम्युनिकेशन स्किल्स. तुम जितनी भी हॉट लड़कियों को देखोगे ना, तुम्हें एक चीज बहुत कॉमन नजर आएगी, एंड दैट इज द वे दे कम्युनिकेट. जिस तरीके से वो बोलते हैं, देयर इज समथिंग वेरी सेंशुअल अबाउट इट. वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. ट्रस्ट मी, नथिंग विल टेक यू फ्रॉम हियर टू हियर other than communication skills. Okay. The third thing that I have written down is detach yourself. Detach yourself. And this advice I have to give to myself as well. जब तुम दुनिया से डिटैच हो जाते हो, लोगों के रिएक्शन से डिटैच हो जाते हो, क्या वो बोल रहे हैं उससे डिटैच हो जाते हो ना, तो लोग तुम्हें वैसे ही रिस्पेक्ट से देखेंगे. यू बिकम अ मिस्ट्री, यू बिकम समथिंग, अ सॉर्ट ऑफ पावर, क्योंकि तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ रहा है लोग क्या कह रहे हैं. तुमने वो इंसान भी अपनी लाइफ में देखा होगा जो लोगों के पीछे पीछे भागता है, लोगों की वैलिडेशन क्रेव करता है. दीज टाइप ऑफ पीपल डू नॉट कम अक्रॉस एज हॉट. इंस्टेड दे कम अक्रॉस एज क्लिंगी. कंट्रारी टू इट, लर्न टू बी हैप्पी अलोन. खुद से हैप्पी रहना सीखो. टेक अ बुक, ग्रैब अ बुक. इफ यू हैव nobody to talk to, read a book. And I gotta give this advice to myself. You know, these days I have been feeling very alone, and I think डिटैचमेंट इज द की. क्योंकि जब तुम डिटैच होते हो ना, तो एवरीथिंग कम्स टू यू. यू डोंट इवन हैव टू वर्क हार्ड. लोग तुम्हारे पास आते हैं, अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आती हैं. विच इज टू से, इसका मतलब ये नहीं है कि यू स्टॉप वर्किंग हार्ड. इसका मतलब ये है कि भाई तुम अपना एफर्ट्स डालो, बट do not cling to it, do not cry about it, do not feel despair about it. Relax, laid back, because you're a hot diva. Things will come to you. Okay. Again, very similar to this that I have written down is, do not crave validation. लोगों की validation मत लो. The moment तुम किसी की validation crave करने लग गए, you are not in your hot girl energy. तुमने उस इंसान को अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बना दिया है. तुमने उस इंसान को अपनी लाइफ की हैंडल्स दे दिया है. एंड दैट इज नॉट अ हॉट गर्ल एनर्जी. एक हॉट गर्ल कभी भी, never in her entire life will let another person control her life. A hot girl will always know कि मेरी life कैसे चलेगी. Look at Nicki Minaj. She's very hot, isn't she? Super hot. She's very bold. Look at Rihanna. Very hot. But उनको पता है कि कैसे अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना है. तुम्हें रियाना को देख के लगता है कि वो कभी भी किसी और की वैलिडेशन के लिए क्रेव करती होगी, या किसी और की वैलिडेशन के लिए अपनी पर्सनालिटी चेंज करती होगी. Not Rihanna thing, right? Because she is hot. So if you want to be hot, that is another thing you need to follow. Stop craving people validation. Trust your judgment. Trust your intuition. अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, that's fine. Networking is important, I do agree, but there are other platforms as well. Solely relying on that one person, nah, not a good idea. Okay. Then the other thing that I have written down is dress according to your body type. See, अभी इससे पहले जो भी चीज़ें मैंने बोली, these were personality based. इसके आगे जो 3 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, these are more appearance based. Because I am not a believer कि तुम्हारी सिर्फ personality hot होगी तो suddenly everybody will go and run behind you. I do feel कि आपको अपनी personality पे भी work करना पड़ता है, आपको अपने appearance पे भी work करना पड़ता है. I remember I was, when I was a kid, I was often told by my own family members कि भाई तू सुंदर नहीं लगती है, या तू अच्छी नहीं लगती है. And that really hit my self-esteem. तो मैंने कभी अपने आप को उस तरीके से नहीं देखा. But the moment people started telling me, like I grew up, and the moment people started telling me कि oh, you look beautiful, there is something. I'm not saying I'm completely reliant on those compliments, but there is something beautiful about knowing that you look beautiful. Not in the sense conventionally I'm not beautiful. Of course I'm not. And I think a lot of people जिनको हम idol मानते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि beautiful है, they are not conventionally beautiful. See, like observe and you'll realize they are not conventionally beautiful. But the reason why we think that they are beautiful is क्योंकि वो अपने आप को इस तरीके से embrace करते हैं. So you should feel good about the way you look. You should never say कि नहीं हमारे जो अंदर है वो इम्पोर्टेंट होता है. जस्ट बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग द वे यू लुक, तो तुम्हें उसको शैडो नहीं करना. यू डोंट हैव टू एस्केप दैट. यू शुड लुक गुड, यू शुड फील गुड अबाउट योर सेल्फ, नॉट जस्ट इंटरनली, एक्सटर्नली ऑल्सो. और तुम्हें प्राउडली बोलना चाहिए कि हाँ मैं बाहर से भी सुंदर लगती हूँ.
That is the confidence you should have, and that comes not only when you change that internal mind shift. जब तुम्हारा होता है mindset shift होता है तभी तुम beautiful नहीं लगते हो, but जब तुम अपने dress अपने body type के according dress करने लगते हो, and I'm not saying just wear certain clothes, no, I'm not saying that. Of course you can wear anything that you want, पर कुछ क्लोथ्स ऐसे होते हैं, मुझे पता है कि ब्लैक कलर डजंट लुक गुड ऑन मी, और इट डज नॉट ब्रिंग आउट necessarily मेरे like अच्छे parts, but the thing is I still have a lot of black clothes on in my wardrobe, but मुझे ये भी पता है कि there are certain clothes that look flattering on me and I try to purchase them as well, कि हाँ जिस दिन मुझे ऐसा लगना है कि ठीक है आज के दिन I feel sad and today I need to look my best, I wear clothes जो मेरे पे flattering लगते हो. So find your body type, कि तुम्हारे body type पे क्या clothes flattering लग रहे हैं. In fact you can chat GPT it, प्रॉम्प्ट्स डालो, आ जाता है. प्रॉम्प्ट्स डालो कि यू हैव ब्लैक हेयर, योर स्किन टोन क्या है, तुम्हारा आई कलर क्या है, एंड दे विल टेल यू कि व्हाट कलर्स लुक गुड ऑन यू. सो अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं एंड यू स्टार्ट वेयरिंग इट, तो तुम्हें खुद को देखोगे तुम मिरर में एंड तुम्हारा इंटरनल डायलॉग चेंज होगा. एवरी टाइम यू विल लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, तुम सोचोगे यार मैं कितनी खूबसूरत हूँ. एंड व्हेन यू थिंक दैट, व्हेन तुम खुद से ये चीज़ सोचते हो ना, दुनिया भी सोचेगी. और उन लोगों पे बिल्कुल बिलीव मत करना जो बोलेंगे कि सिर्फ अंदर से काम करो. बहुत काम करो, इनफैक्ट इतना ज्यादा काम करो कि यू बिकम अनबीटेबल, तुमको कोई रिप्लेस ही ना कर सके. इतना ज्यादा काम करो अपने स्किल्स पे, अपने माइंडसेट पे, अपनी नॉलेज पे, एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर ऑल्सो, बट अपने आउटर एक्सपीरियंस पे भी, आउटर अपीयरेंस पे भी पुट वर्क. ठीक है, एंड इट मेक्स यू फील गुड, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है व्हेन आई डू सेल्फ केयर, मेरा दिन बहुत बेकार चल रहा है एंड आई जस्ट सिंपली डू सेल्फ केयर. मैंने अपना मुंह धो लिया, और एज सिंपल एज अप्लाइंग मॉइस्चराइजर एंड अप्लाइंग अ सिरप, दैट मेक्स मी फील गुड. तो इट्स फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल. तो तुम्हें बाहर से भी अच्छा लगेगा, तुम्हें अंदर से भी अच्छा लगेगा, एंड इट्स वेरी गुड, राइट? सो या, ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप. द sixth thing that I have mentioned down is also put efforts in skincare. And skincare मेरे को भी, जब मैं लोगों को सुनती थी और फीमेल यूट्यूबर्स को सुनती थी अबाउट द स्किन केयर, मुझे बहुत डर लगता था. मुझे लगता था आई हैव टू स्पेंड सो मच मनी ऑन इट. बट द थिंग इज यू ओनली नीड two things. There are only two things that have significantly improved my skin. So if you can see my skin, I currently don't have any pimples or anything of that sort. And only because of two products. One, cleanser, and the second, moisturizer. That's it. इतना ही चाहिए तुम्हें, और ये तुम्हें ना easily मिल जाएगा. अपनी स्किन टाइप, अगेन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि तुम्हारी स्किन टाइप क्या है. लाइक इज इट फॉर मी इट्स सेंसिटिव, ड्राई सेंसिटिव. तो तुम्हारी क्या, इज इट ड्राई, इज इट ऑयली? लुक फॉर इट, वीडियोस देखो कि कैसी तुम्हारी स्किन टाइप है, एंड वंस यू नो इट, स्टार्ट रिसर्चिंग कि इस डोमेन में क्या बेस्ट प्रोडक्ट है तुम्हारे बजट के अकॉर्डिंग. ऑफ कोर्स बजट शुड नॉट exceed, and for every good product there is a dupe जो कि उतना ही अच्छा होता है, तो you can always buy that. ठीक है, final and the most important thing that can instantly give you that glow is eat healthy. मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, for like the past 2-3 months I cannot explain कि मैं कितना बुरा खा रही थी, इतना ज़्यादा बुरा खा रही थी कि मैं ये वीडियो बैठ के बना भी नहीं सकती थी कि how to look hot, because I myself was not feeling hot. But since 1 week only I have come to clean diet, and वो starting के 1-2 दिन बहुत difficult थे, but now I have come to the rhythm and I feel good. मैं अपने आप को अभी देख रही हूँ बातें करते वक्त, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि मैंने भाई I went on diet, I went on clean food, अब मैं बाहर का नहीं खा रही हूँ, and I'm feeling also good. I feel more relaxed, I feel more calm. So do that, eat healthy. ट्रस्ट मी, अंदर से भी अच्छा लगेगा और बाहर के जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना, तो वो तो फैबुलस होने ही है. ओके, एंड वर्कआउट, ओके, बिकॉज व्हेन यू वर्कआउट अगेन you feel good, your day goes well, and you feel good externally also. So do this, right? So these were some of the habits that you can incorporate to look hot. और hot सिर्फ appearance wise नहीं, तुम्हारे aura wise. मतलब इस तरीके का hot कि अगर तुम एक गंदी सी हुडी, एक घर की हुडी में भी बाहर घूम रहे हो ना, तो तुम्हें हॉट फील हो, तुम्हें लगा कि nobody is better than me. Okay, I hope you like this video, and if you do, please follow, please subscribe, क्योंकि जब तुम ये सब्सक्राइब करोगे ना, तो similar videos तुम्हारे फीड में आएंगी, and you will become the hot girl that you want to be. Thank you. Bye bye.